Hello students, a very good evening to all of you. Welcome to my channel. This is a very important class on Punjab State Level Master Cadre Exam 2022 and we have been discussing the question paper of English literature. Today is the fifth part of the video. We have already discussed 100 questions or 50 questions baki hai. Then this question paper will be completed. But before starting, I want to give you a brief introduction about myself. My name is Brishti Mukherjee. I have qualified NTA UGC NET exam in English literature 4 times and have also qualified West Bengal state examination. I have 2 years of teaching experience. Moreover, I have also taught in NPTEL online course from IIT Madras 3 times. So that is all about myself. This is the link of my Telegram channel. The link is also given in the description box. So those of you who have not joined yet, please join to get notification of all important classes. And also please don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel so that many more new learners can join. And these are the timings of your classes: Monday to Friday at 8:30 p.m, Saturday, Sunday off. So don't forget to join me live. Please subscribe the channel and press the bell icon to get notification. Okay, so let's start. We have discussed 100 questions and sorry. Today we will start from 101. So this is your first question. Which of the following works of Milton is also known as On His Blindness? Which of the following works of Milton is also known as On His Blindness? So what will be the answer? On the morning of Christ's nativity, La Allegro, When I Consider How My Life is Spent, or On Arriving at the Age of 23. So you all know that Milton has written all these works, and On His Blindness is his very famous sonnet. Okay? So on the morning of Christ's nativity, that was his first important ode in that sense, written at the age of 23. La Allegro and Il Penseroso, these two are companion poems, and option number 3 here is the correct answer. When I consider how my life is spent, this is the first line of the poem. Okay, so next question में आते हैं. Who wrote aspects of the novel? Who wrote aspects of the novel? James Joyce, E.M. Forster, T.E. Hume, Ezra Pound. Ezra Pound. तो क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर? Who wrote aspects of the novel? तो यस, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, E.M. Forster. And we know E.M. Forster as a novelist, but this is his most important essay, aspects of the novel. ठीक है. And E.M. Forster का ये जो वर्क है aspects of the novel, it is basically talking about how novel can be written. Aspects of the novel is basically about how novel can be written, and actually it is a series of lectures. Delivered by him at the University of at Trinity College in the University of Cambridge. तो यहाँ पर उन्होंने लेक्चर को डिलीवर किया था, तो वहां से लिया गया है ये कलेक्शन. तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हियर, E.M. Forster. Moving on to question number 3. Question number 3. Who wrote the story of Rimini? Who wrote the story of Rimini? So question number 3 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, Leigh Hunt. Leigh Hunt, you all know, he is a romantic poet, and Leigh Hunt is mainly famous as associated with Cockney School of Poetry, जिसके साथ Keats and बाकी लोग associated थे. तो story of Rimini is a work written by Leigh Hunt. Okay. Next question है, which was not written by John Webster? Which was not written by John Webster? The White Devil, The Duchess of Malfi, The Changeling, The Devil's Law Case. तो John Webster का लिखा हुआ वर्क कौन सा नहीं है? Again there is not here. So as you all know, John Webster is famous for writing revenge tragedies.
right? And his two most famous plays were White Devil and Duchess of Malfi. तो ये तो उनके ही वर्क है. तो जो उनके वर्क नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, द डेविल्स लॉ केस. The Devil's Law case is not written by John Webster. The Devil's Law case is not written by John Webster. Okay. And हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है, इट इज नॉट डेविल्स लॉ केस, इट इज ऑप्शन नंबर सी, द चेंजलिंग, written by Thomas Middleton, right? So Changeling is written by Thomas Middleton. It is not written by John Webster. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which work of Seamus Heaney won the Gregory Award? Which work of Seamus Heaney won the Gregory Award? तो क्या होगा आंसर? डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट, विंटरिंग आउट, डोर इनटू द डार्क, द बेरियल एट थीव्स. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट. डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट, इट won the Gregory Award. And you all know Seamus Heaney is famous for translating Beowulf in modern English, translating Beowulf in modern English. Okay. Next question में आते हैं. At the end of As You Like It, which appears as Deus Ex Machina? Deus Ex Machina, it is a specific technique which was originally popular in Greek drama. And इसमें क्या होता था कि on the stage, if you have to drop down a particular character or any particular figure और कोई भी ऑब्जेक्ट को आपको ऊपर से नीचे लाना है, तो एक पर्टिकुलर मशीनरी का यूज होता था जिसको हम कहते हैं ड्यू एक्स मशीना. ठीक है. तो एट द एंड ऑफ एज यू लाइक इट, व्हिच अपीयर्स एज ड्यू एक्स मशीना? तो करेक्ट आंसर है हाइमेन. हाइमेन जो मैरिज सॉन्ग गाते हैं वही हाइमेन की बात हो रहा है. तो हाइमेन एट द एंड में अपीयर हो रहा है एज ड्यू एक्स मशीना. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. हु रोट द स्ट्राइडर्स एंड सेकेंड साइड? तो स्ट्राइडर्स ये हमने बताया था इन आवर क्लास ऑन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, दैट स्ट्राइडर्स इज रिटन बाय ए के रामानुजन. ठीक है. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हियर, ए के रामानुजन. एंड सेकेंड साइड इज ऑल्सो अ वर्क रिटन बाय हिम. क्वेश्चन नंबर 107. नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड फाइन फॉर व्हाट इज नॉट, आवर सिंसियर लाफ्टर विथ सम पेन इज फ्रॉट. Who wrote this work? Who wrote these lines? So these lines are written by which romantic poet or restoration poet? Keats, Shelley, Blake or Dryden? Good evening Ved Vyasji. Good evening Elena. Welcome. So all of you are late today in the class. We have already discussed 8 questions. कोई बात नहीं. तो चलो इसका आंसर बताओ. We look before and after and find for what is not, our sincere laughter with some pain is fraught. Who wrote these lines? Keats, Shelley, Blake and Dryden. So answer in the comment section. Answer in the comment section. क्या होगा आंसर? So what will be the answer? Good evening, Prashanjit. Welcome. Okay, no problem. So yes, you are saying to a Skylar. Yes, absolutely right. Option number B is the correct answer, written by P.B. Shelley. And the name of the poem is To a Skylar. इसके बाद जो सबसे famous line था वो है कि our sweetest songs are those that tell of our saddest thoughts. Right? तो जो famous line हम सबको पता है वो इस line के बाद ही है. In the same poem To a Skylar. So yes, absolutely right. Option number B is the correct answer. Next question में आते हैं. Who called Ben Jonson the father of English comedy? Charles Gildon, Edward Young, Lewis Theobald, John Dryden. किसने बताया था बेन जॉनसन को द फादर ऑफ इंग्लिश कॉमेडी? क्वेश्चन नंबर 109. क्या होगा आंसर? ओके.
तो क्वेश्चन नंबर 109, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स गिल्डन. चार्ल्स गिल्डन इज द करेक्ट आंसर हियर. ऑप्शन नंबर ए इज राइट, चार्ल्स गिल्डन. यस. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. 110, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय हेनरी फील्डिंग. नॉट रिटन बाय हेनरी फील्डिंग. यस, चार्ल्स गिल्डन इज द करेक्ट आंसर. इसका आंसर क्या होगा? वेरी इजी क्वेश्चन. टॉम जोन्स, अमेलिया, शामिला, क्लैरिसा, which is not written by Henry Fielding. What will be the answer? Good evening, Shomo. Welcome. What will be the answer which is not written by Henry Fielding? Yes, इसका जो करेक्ट आंसर है, एब्सोल्युटली राइट, इट इज ऑप्शन नंबर डी, क्लैरिसा. क्लैरिसा हार्लो. इट इज अ नॉवेल बाय सैमुअल रिचर्डसन. पामेला, Samuel Richardson. Pamela and Clarissa, these two novels are by Richardson. बाकी तीनों नॉवेल ही है फील्डिंग का. शामिला तो आप सब जानते हो, इट इज अ पैरोडी ऑफ पामेला, फेमस पैरोडी ऑफ पामेला, written by, yes, written by Henry Fielding. नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. विच प्ले राइट इज एसोसिएटेड विथ कॉमेडी ऑफ मेनेस. अनदर इजी क्वेश्चन. W.B. Yeats, T.S. Eliot, Harold Pinter, Arthur Miller. तो कॉमेडी ऑफ मेनस बेसिकली क्या चीज है, मैं बहुत शॉर्ट में एक बार बता दूं. कॉमेडी ऑफ मैनर्स हमने देखा था, विच वाज पॉपुलर इन रिस्टोरेशन एज. बट कॉमेडी ऑफ मेनेस, मेनेस वर्ड मीन्स थ्रेट. तो इट इज अ काइंड ऑफ एब्सर्ड प्ले बट नॉट सेम टू सेम. इसका जो मेन फीचर है वो ये है कि अपेरेंटली द स्ट्रक्चर इज कॉमिक, बट इनसाइड दैट कॉमिकल atmosphere there is some underlying threat. Something is going to happen, something ominous is going to happen. इस टाइप का फीलिंग कंटिन्यूअसली चलता है प्ले के अंदर. बाहर में इट इज अ कॉमेडी, बट अंदर में इस टाइप का कॉन्फ्लिक्ट चलता है. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कॉमेडी ऑफ मेनस. तो यस, एब्सोल्युटली राइट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. इट इज हेरोल्ड पिंटर. इट इज हेरोल्ड पिंटर. गुड इवनिंग एकतबा, वेलकम. यस, गुड इवनिंग एकतबा, वेलकम. तो हाँ, तो हेरोल्ड पिंटर इज द correct answer here. Question number 112. Who wrote the preface for Untouchable? Very basic question. Rabindranath Tagore, Mahatma Gandhi, E.M. Forster, Lala Lajpat Rai. क्या होगा आंसर? Who wrote the preface for Untouchable? Who wrote the preface for Untouchable? नो प्रॉब्लम इक्तबा, आज से रेगुलरली क्लासेस होगी. बीच में 2 दिन ऑफ था ड्यू टू योर नेट एग्जाम. So from today onwards, classes will regularly happen. So you can join from now. Okay. So who wrote the preface for Untouchable? Very famous novel by Mulk Raj Anand and a classic piece considering the Dalit background. ठीक है. Paka is the main character. So yes, absolutely right. E.M. Forster is the correct answer. Good evening, Moshumi. Welcome. Yes, E.M. Forster is the correct answer. Option number C. ठीक है. तो देखो, ये स्कूल लेवल का एग्जाम है, तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चंस यहाँ पर पूछा गया है अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ नेट एग्जाम. बट यस, बेसिक्स भी क्लियर करना जरूरी है, तो इससे आपका जो इजी क्वेश्चंस है वो भी रिवाइज हो रहे हैं. राइट. तो चलो, E.M. Forster is the correct answer. Moving on to question number 113. Another easy question. Who wrote Tradition and Individual Talent, the Metaphysical Poets? T.S. Eliot, W.B. Yeats, Virginia Woolf, W.H. Auden. I am planning to start another series on American literature and other non-British literatures. तो इंडियन लिटरेचर सबसे पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं, देन उसके बाद वी विल स्टार्ट अनदर सीरीज ऑन अमेरिकन लिटरेचर. ठीक है. तो उसमें भी कई सारे राइटर्स हैं. वी विल डेफिनेटली रीड दोज राइटर्स. एंड ऑल्सो टेम्पेस्ट हमारा चल रहा था. टेम्पेस्ट के ऊपर मैंने आपको बताया था, आई विल गिव अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द होल प्ले, द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्ले. तो वो क्लास भी होगी इन दिस पर्टिकुलर वीक.
Yes, correct answer is T.S. Eliot. इसमें explain करने की कोई बात नहीं है. And we will also analyze these kind of critical essays in detail. तो जो भी major essays है, major works हैं, हमने start भी किया था criticism की classes. तो जैसे प्लेटो का रिपब्लिक हमने पढ़ा था, एरिस्टोटल का पोएटिक्स हमने पढ़ा था, तो वैसे ही ये जो essays है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे जरूर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. नेम द सिस्टम ऑफ ग्रामेटिकल एनालिसिस इन लिंग्विस्टिक्स दैट डिवाइड सेंटेंसेस इनटू सक्सेसिव लेयर constituents until in the final layer each constituent consists of only a word or meaningful part word. Transformational analysis, immediate constituent analysis, internal cluster analysis और inferential analysis. ठीक है, तो दिस इज फ्रॉम लिंग्विस्टिक्स. बहुत ही लंबा डेफिनेशन है, तो आप ध्यान से पढ़ो एंड देन आंसर. तो इसको हम क्या कहते हैं? क्या होगा आंसर? ओके, तो यस, हाँ, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, हाँ, इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस. नो मौसमी, इट इज नॉट सी, इट इज बी, इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस. ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे पहले जिन्होंने दिया था उसका नाम है लियोनार्ड ब्लूमफील्ड. Leonard Bloomfield has given this concept first and it was later developed by Rulon Wells, another critic, Rulon Wells, another linguist. ओके, एंड यहाँ पर जो डेफिनेशन दिया है वही इसका डेफिनेशन है एग्जैक्टली, इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस. एंड लियोनार्ड ब्लूमफील्ड बेसिकली यूज्ड दिस टेक्निक. इट इज अ टेक्निक ऑफ एनालाइजिंग द सेंटेंसेस एंड दिस टेक्निक वाज अप्लाइड बाय लियोनार्ड ब्लूमफील्ड व्हाइल एनालाइजिंग नोआम चॉम्स्कीज वर्क, द बेसिकली द अर्ली वर्क्स रिटन बाय नोआम चॉम्स्की. तो उसमें उन्होंने ये टेक्निक को अप्लाई किया था एंड फर्दर इट वाज डेवलप्ड बाय रूलॉन वेल्स. Rulon Wells. Okay, so yes, acha, yes, immediate constituent analysis. Yes, it is about the analysis of a sentence. ठीक है, तो यहाँ पर देखो डेफिनेशन बता ही दिया गया है कि इट इज दैट काइंड ऑफ एन एनालिसिस इन विच वी डिवाइड द सेंटेंसेस इनटू सक्सेसिव लेयर्स. तो यू हैव हर्ड अबाउट द टर्म्स लाइक डीप स्ट्रक्चर एंड सरफेस स्ट्रक्चर. तो हर एक सेंटेंस का एक सरफेस स्ट्रक्चर होता है एंड जब हम उसको एनालाइज करते हैं यूजिंग द ट्री मेथड, तो उससे बहुत सारे छोटे छोटे चीजें बाहर आते हैं, उसी को हम कहते हैं सक्सेसिव लेयर. मतलब you have to focus on the deep structure of a sentence, yes, of a sentence, and then you need to divide it into various constituents. Constituent means different parts of a sentence. ठीक है, तो उसमें words हो सकता है, उसमें parts of speech हो सकता है, tenses हो सकता है, these are all constituent. So you have to divide it into constituents and each constituent consists of only a word or a meaningful part word. मतलब जैसे हम एक वर्ड को सिलेबल में डिवाइड करते हैं, सिलेबल का भी वही डेफिनेशन है कि एक एक सिलेबल आपका मीनिंगफुल होना चाहिए, राइट. सिमिलरली यहाँ पर भी बात हो रहा है, इन अ सेंटेंस व्हेन यू डिवाइड दैट कॉन्स्टिट्यूएंट, तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट में आप एक ही वर्ड को ले सकते हो एंड उस वर्ड को आपको फिर से डिवाइड करना होगा. तो दैट इज एनालाइजिंग अबाउट द डीप स्ट्रक्चर, उसी को हम कहते हैं इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. Moving on to question number 115. Who wrote the Waverley Novels? Another easy question. Walter Scott, Henry Fielding, Nathaniel Hawthorne, Lawrence Stern. क्या होगा आंसर? Who wrote the Waverley Novels? Who wrote the Waverley Novels? Very easy question and very famous novelist who is popularly known for that series of novels. Hmm. Right, Shom. Absolutely.
Yes, Walter Scott is the correct answer. Option number A. Absolutely right. Walter Scott is famous for Waverley Novels. तो बहुत सारे मतलब इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस इस एग्जाम में है, राइट? कॉन्सेप्चुअल से ज्यादा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन. नेम द नरेटर ऑफ वदरिंग हाइट्स, written by Emily Bronte. Who is the narrator? Nellie Dean, Isabella Linton, Edgar Linton, Hindley Earnshaw. Yes, historical novel, series of historical novel, Waverley Novels. So, name the narrator of Wuthering Heights. क्या होगा आंसर? Question number 116. Yes, Ivanhoe is another famous novel. Absolutely right. Yes. तो आप सब ऑप्शन नंबर ए कह रहे हो, नेली डीन. यस, एब्सोल्युटली राइट. नेली डीन इज द करेक्ट आंसर हियर. Nellie Dean is the correct answer. She is the main narrator of Wuthering Heights. Absolutely right. A is the correct answer. Moving on to 117. Which play is not written by Shakespeare? Very easy question. Which play is not written by Shakespeare? Edward II, Richard III, Henry V, King John. Which is not written by Shakespeare? क्या होगा आंसर? Yes, absolutely right. It is option number A, Edward II, which is another famous play written by Christopher Marlowe. It is not written by Shakespeare. बाकी जितने भी plays है वो शेक्सपियर का है. तो very easy question है, आप easily बता सकते हो. Right, A is the correct answer here. Edward II by Christopher Marlowe. Yes. Next question में आते हैं. Name the term which is ascribed to the real or fictional person after whom a book, film or place is होगा यहाँ पर. Place is named. Autobiography, eponymous, pseudonym, epithet. तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन पूछ रहा है कि नेम द टर्म which is ascribed to the real or fictional person after whom a particular book or film or place is named. तो इसको हम क्या कहें? ठीक है. तो क्या होगा इसका आंसर? ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, हाँ, इसमें आपको दोनों ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूजन होगा. यस, एपोनिमस एंड ऑटोबायोग्राफी के बीच में कंफ्यूजन होगा, बट करेक्ट आंसर इज एपोनिमस. करेक्ट आंसर इज एपोनिमस. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, ऑटोबायोग्राफी क्यों नहीं होगा. यहाँ पर कह रहा है कि नेम द टर्म व्हिच इज एस्क्राइब्ड टू द रियल और फिक्शनल पर्सन आफ्टर हुम अ बुक, फिल्म और प्लेस इज नेम्ड. तो सिर्फ बुक की बात नहीं कर रहे हैं, फिल्म और प्लेस की भी बात कर रहे हैं. एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर एक रोड का नाम है, एक पर्टिकुलर जगह का नाम है. फॉर एग्जाम्पल शेक्सपियर सॉरोली. तो व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स दैट शेक्सपियर इज एन एपोनिमस पर्सन, जिसके नाम से एक रास्ते का नाम है, जिसके नाम से कोई फिल्म का नाम है. ठीक है.
So eponymous is the correct answer. Yeah, it is not exactly autobiography means writing about yourself. ठीक है, one person is writing about yourself. तो यहाँ पर वो बात नहीं कर रहे हैं, इससे फिल्म और प्लेस भी जुड़ा हुआ है. तो yes, correct answer is eponymous. I think this question is a tricky one. इसमें दोनों के बीच में confusion होगा, but correct answer is eponymous. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. नेम द नॉवेल ऑफ हार्डी विच वाज बर्न्ड ओपनली इन द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन एंड focuses on the issues of class, education, religion, morality and marriage in the Victorian age. कौन सी नॉवेल है हार्डी का? टेस्ट ऑफ द डर्बरविल्स, द रिटर्न ऑफ द नेटिव, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, जूड द ऑब्स्क्यूर. दिस नॉवेल वाज हाईली condemned by the public at first and इसको publicly जलाया गया था मैन्युस्क्रिप्ट को. कई सारे controversial issues इसके अंदर है. तो वो कौन सी नॉवेल है? What will be the answer? Okay, Shomo is saying option number D, Jude the Obscure. तो इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 150 क्वेश्चन है. ठीक है, तो आज हम करेंगे 125 तक and tomorrow will be the last class on this particular question paper, on this question paper. ठीक है, कल इस क्वेश्चन पेपर को हम कंप्लीट कर देंगे. ओके, एंड देन आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ टेम्पेस्ट. ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर बहुत दिनों से चल रहा था, बीच में नेट एग्जाम आ गया था इसीलिए मैंने स्टॉप कर दिया था. तो इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करके वी विल फोकस ऑन द रिमेनिंग टॉपिक्स. Right? Yes. Correct answer is absolutely right. Option number D, Jude the Obscure. Jude the Obscure is that controversial novel. Right. Question number 120. John Donne belongs to the school of metaphysical poetry, tragicomedy, epic poetry, parody. Very easy question. John Donne belongs to the school of. Yes, right, Ektava. Jude the Obscure is very painful story. Absolutely. वैसे तो हार्डी के सारे ही नॉवेल्स पेसिमिस्टिक नॉवेल्स हैं, बट राइट, यस, इट इज अ वेरी पेनफुल. Yes, absolutely right. It is metaphysical poetry. Option number A is the correct answer. Right, Elena? Last complete novel of Hardy, Jude the Obscure. Absolutely. Okay. So next question में आते हैं. Question number 121. Name the periodical started by Addison and Steele. Name the periodical started by Addison and Steele. Very easy one. The Tatler, the Tatler and the Spectator, the Rambler, Latter-day Psalms, or Chronicles. What will be the answer? What will be the answer? Very easy question. Yes, absolutely right. It is option number A, the Tatler and the Spectator. बाकी options भी देख लो. The Rambler is by Samuel Johnson, right? And Latter-day Psalms ये तो periodical नहीं है. It is a work written by Nizam Ezekiel. Nizam Ezekiel अब तक हमने नहीं करा है Indian poetry में. We will definitely do that. So Latter-day Psalms is a work by Nizam Ezekiel. Correct answer is yes, Tatler and the Spectator. Question number 122. Which is a prominent theme in Evan Boland's work? Evan Boland. Irish national identity, race rights, nature and mysticism. Which is a prominent theme in Evan Boland's work? Evan Boland, थोड़ा सा spelling गड़बड़ था. Evan Boland, an Irish poet. She is a female poet. Irish female poet. She was born in Dublin
Ireland, and she died very recently in 2020. तो क्या होगा आंसर? हाँ, इसका जो आंसर है दैट इज आयरिश नेशनल आइडेंटिटी. यस, क्वेश्चन नंबर 122. राइट राइट, आयरिश नेशनल आइडेंटिटी. मैंने आपको अभी बताया कि बॉर्न इन डबलिन, तो ऑब्वियसली आयरिश नेशनल आइडेंटिटी ही होगा. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. राइट. Question number 123. When did the Shepherdes Calendar appear? Shepherdes Calendar 1559, 1569, 1579, 1589. When did Shepherdes Calendar appear? Shepherdes Calendar किसका वर्क है? बाय एडमंड स्पेंसर. तो ये कब पब्लिश हुआ था? Yes, option number C is the correct answer, 1579. And this work was modeled on Virgil's Eclogues. Virgil's Eclogues. Yes, absolutely right. Option number C is the correct answer. No, it is 1579. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. हु रोट एसेज ऑफ एलाइजा? अब सबको पता है, कोलरिज, डिक्वेंसी, चार्ल्स लैम, जॉर्ज ऑरवेल. क्या होगा आंसर? यस, एसेज ऑफ एलाइजा, एब्सोल्युटली राइट, बाय चार्ल्स लैम. इसमें तो एक्सप्लेन करने की कोई बात नहीं है. चलो, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन. विच इज द फर्स्ट बुक ऑफ राजा राव? फर्स्ट बुक ऑफ राजा राव. The Serpent and the Rogue, Comrade Kirillov, Kanthapura, The Chess Master and His Moves. We have already done Raja Rao in the classes on Indian English literature. Which is the first book of Raja Rao? First book क्या? Yes, the first book is absolutely right. It is Kanthapura. Option number C is the correct answer. Kanthapura. Okay. So, yes. So that is the end of today's class. Thank you all for joining. This is the link of my Telegram channel. The link is also given in the description box. So those of you who have not joined yet, please join to get the notification of all important classes. So tomorrow we will do the last part of this question paper and uske baad ye complete ho jayega. So don't forget to join me live. Please subscribe the channel and press the bell icon to get notification. Okay, so thank you all. Bye bye everyone. Good night. See you all tomorrow at 8:30 p.m.